a lady who is my student, and she is quite overweight. And I, have assessed that her strength of her bones and all that is not that much that she can take on running and so on. So I have put her on regular walks. I could have done it for cycling also, because sometimes what happens, even walk can be a problematic for people. It can cause pain in the, shin bone and all that, ankles, knees. Problem हो जाता है लंबा walk करना. So depending upon what your state is, you will have to start exercising. That's a must. And uh, I advise most people who are grossly overweight to exercise at least 2 sessions in a day, because by doing 2 sessions in a day, you raise your metabolic rate and the impact stays for longer. That's one. And as far as diet is concerned, you should drastically cut down on sugar, tea, coffee, soft drink, juices, and things like that. Also, fats and oil, and increase your protein intake and intake of fruits and vegetables. These are two basic measures. Balance, to understand the things better, you can buy my fitness guide, or you can go to our website and read our essay or blog on metabolic rate, and how our basal metabolic rate is very important in determining our weight and how it can be controlled. Broad things I have told you. So also, you have to be very careful that when you start exercising, that you don't injure yourself, because if you injure yourself, you will be put off for exercise. You will have to take a break, and that will be problematic, and it will be demotivating also. So build up gradually. So these are some of the things you can do. You can listen to the interviews of some of our successful candidates who have reduced up to 30 kgs and all on our YouTube channel. You can listen to those. Yogita, you can flag those in this, below them, so they can refer to those. So you'll get a first-hand view as to how these people did all this work. So this is broadly what it is. And don't be in a hurry, to reduce weight, because it's not going to work. Don't fall for any of these, what do you call, क्या बोलते हैं इनको, popular, fad diets, कोई Atkins diets and falana diet and all that, they don't work. Generally, they're not rationally very sound. So I don't advocate any of these things. जो भी घर में बन रहा है उसको खाइए, बट कंट्रोल में जो चीजें मैंने बताई, एक्सरसाइज करके. This is how you should do. Broadly speaking, a person should be satisfied by reducing about 3 kgs per month, or maybe even 4, not more than that. More than that will be difficult to sustain. It will be dangerous also. It will become unhealthy. So in the first 1 or 2 months, you can reduce 4 kg, 3 kgs, 2.5, and gradually it will come down to about 2.5 kgs per month. You can't drastically keep reducing at that pace. So this is how broadly the tips are. बाकी रीड करके अपना प्लान करिए. ये है, और बात नहीं बन रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे पास एनरोल कर लिया. I'll guide you because I have guided a lot of people. Thank you. Harsh Kendall has written to us. Sir, during lockdown, I became introvert, felt guilty due to overthinking about my small mistakes. Due to this, my productivity and efficiency has reduced. Can you suggest me some activities to enhance my thinking efficiency that can help me in that tag? देखिए, पहली बात तो ये, जिंदगी में बैड टैट जो ध्यान रखते हैं ना, उनको सक्सेस जिंदगी में मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उनका आउटलुक ही बड़ा नैरो है, और नैरो आउटलुक से बात नहीं बनती है. पहली बात तो एसएसबी देखिए, ये होलिस्टिक सेलेक्ट असेसमेंट सिस्टम है.
इसमें हम देखते हैं कि इंडिविजुअल इज सुटेबल टू बी सेलेक्टेड टू बी ट्रेन टू बिकम एन ऑफिसर और नॉट, दैट्स इट। उसमें ये वैट टैट शैट नहीं आते हैं। आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू अ फ्रेंड हु इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एंड वो कह रहे थे कि आप ये टीएटी का असेसमेंट वगैरह कैसे करते हैं, ऑल दैट, बिकॉज दिस लेडी वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विद मी। एंड आई सेड कि यार यहाँ तो ऐसा भी केसेस होते हैं कि लोग पहले से कहानी तैयार करके लाते हैं, ब्लैंक स्लाइड स्टोरी में क्या लिखना है, ऑल दैट, वो पहले से उनको पता रहता है, दे नो ऑल दीज थिंग्स। तो शी स्टार्ट लाफिंग, अच्छा कहने लगा ऐसा होता है, मैंने कहा ऐसा ही होता है हमारे सिस्टम में। So anyway, let's not get too much into that. Keep away from SSB focus. इंट्रोवर्जन की आपने बात की। देखिए, इंट्रोवर्जन ऐसा नहीं होता कि लॉकडाउन होने से बंदा इंट्रोवर्ट हो जाता है। इट कैन नॉट हैपन, ये आपका नेचर है। एंड इंट्रोवर्जन की डिग्रीज होती है। तो आप बातचीत करना शुरू कर दीजिए, आप ओपन अप हो गई है। आप, लॉकडाउन हमारे लिए भी लगा था, सबके लिए लगा था, तो you can now start interacting with people. So don't overly rate this lockdown business. बाकी जो है आपका रूटीन और प्रोडक्टिविटी जो डेली लाइफ की है, उसमें कमियां होगी और उसको सुधारने के लिए आपको करना चाहिए एफर्ट। फॉर दैट, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू गेट क्लैरिटी एज टू व्हाट यू नीड टू डू इन लाइफ। अब प्रॉब्लम अगर आपका जैसे लग रहा है वैट टैट की बात की है, तो शायद आपके दिमाग में एसएसबी है फोकस। तो एसएसबी जो है, तो उसके लिए रिटन एग्जाम पास करना है और फिर उसके बाद ओवरऑल क्वालिटीज आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए टू क्लियर। अब ये हैं चीजें, इसके लिए आपको मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज समथिंग विच इज इंटरनल, विच कैन नॉट बी बॉट फ्रॉम द मार्केट। तो इफ यू आर मोटिवेटेड इनफ, you set your goals for the written exam, target a good score there, and along with that maintain good physical fitness and general awareness. इस हिसाब से systematically plan करिए। If you are a student, then do well in your studies, which are mandated core subjects. And if you are a worker, keep performing well at your workplace. You do these things, then it will be good enough. So along your daily requirements of studies as a student, or daily routine of your work life, if you're a worker, you will have to build your routine around that and thereafter stick to it. And sticking to it will require motivation. तो वो है, आपको डेली प्लान्स वगैरह फॉलो करेंगे तो आप बेटर डिसिप्लिन वगैरह हल्के हल्के अपना डेवलप करिए। झटके से हो सकता ना हो, शुरू में जब आप प्लान बनाते, यू मे नॉट बी एबल टू फॉलो इट टोटली, कोई बात नहीं है, डोंट लूज हार्ट, गेट बैक अगेन। हो सकता है यू आर फॉलोइंग, एबल टू फॉलो इट 70-80%, दैट्स आल्सो गुड, इट विल बी मोर प्रोडक्टिव देन योर लाइफ वाज अर्लियर। एंड इन दिस मैनर स्लोली ट्राई एंड गेट टू 100% ऑफ फॉलोइंग योर रूटीन। इस तरह से इंप्रूवमेंट होगा। अब रूटीन वगैरह कैसे बनाते हैं, ऑल दैट यू कैन सी ऑन आवर यूट्यूब चैनल, कि हमने एक 70-day प्लान डाला हुआ है कि कैसे एस्पिरेंट्स ने अपना प्लान बनाया, उसको फॉलो किया। And you can listen to the interviews of some of our students as to how they improved their self-discipline, how they improved their language, and various qualities which got them success in life. So these are some of the tips which will help you. That's it. Thank you. Sir, Love Punjab is asking if character intact, if character is not of our age, is it good to take some character from outside? That means, okay, this boy is trying to ask a question about the thematic perception test, no? In that वो कह रहा है कि कैरेक्टर पिक्चर में अगर है ही नहीं, इज दैट सो? अपनी एज के हिसाब से कोई दिख नहीं, हाँ। नहीं। देखिए, ये मिसकंसेप्शन है बेटा कि आपने अपने जेंडर और अपनी एज का मेन कैरेक्टर, दिस इज रॉन्ग। जो भी उसमें मेन कैरेक्टर दिख रहा है उसको ही बनाना है। लेट अस से एक 6 साल की गांव की लड़की दिखाई है पिक्चर में, दिख नहीं रहा है तो बाहर से लाना जरूरी है क्या? मैं सुन ली बात, मैं समझ गया
कि अगर आपके जेंडर और एज का कैरेक्टर पिक्चर में नहीं है तो उसे आपने बाहर से घुसेड़ना है। तो ये नहीं है, ये गलत धारणा है बिल्कुल। पर ये कोचिंग वालों से बनी हुई है। दिस इज नॉट करेक्ट। आई वॉज गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर मेरे को दिखाया गया एक गांव में 6-7 साल की बच्ची है और कोई कैरेक्टर नहीं दिख रहा, तो मैं उसी की स्टोरी लिखूंगा। अब मैं शहर का रहने वाला बूढ़ा आदमी हूँ, बट आई विल नॉट इम्प्लांट माई, आई विल नॉट से दिस इज माई ग्रैंड डॉटर और फिर ग्रैंड फादर की स्टोरी लिख दूंगा। दैट विल नॉट बी डन, दैट शुड नॉट बी डन ऑल्सो। I will write the story about that girl only based on whatever knowledge base I have. That is how these stories are required to be written. So planting characters from outside is not warranted. And this, thought that the character has to be, main character has to be of your age and gender is absolute trash. Please do not believe it. Thank you. Okay. Sunaina Sandhu is asking a different question. Good morning, sir. Sir, our forces all about building harmony between what we think, what we do, and what we speak, or it's just being a good human being, a good citizen. What is it all about? The course which No Frills Academy is offering. She wants to know about. No, she's asking in general SSB or forces, defense forces, is about Acha, building acha. harmony. We think, Okay, what we okay, do, okay, what okay, we okay, speak. okay, okay, okay. Yes. Don't have to repeat. Don't have to repeat what you said. I heard that. See, thing is that the requirement of services selection board is to identify people who are suitable to be trained to become officer. That's it. So for that, we have separated out in 15 officer-like qualities, which you can read as to what they are, reasoning ability, effective intelligence, like this, blah, 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 15 hai quality. So practically the everything about a person. तो जो है, आपको इन्हें जानने की जरूरत नहीं है। You also don't have to get involved in this हारमोनी शारमोनी, और आपके मतलब probably I could gather there is a thought process कि SSB में वो इंडिविजुअल सेलेक्ट होता है जिसका थिंकिंग, एक्शंस एंड या थॉट्स एंड एक्शंस दे आर इन सिंक। मतलब जो है कि मुझे मैंने एक आंसर पढ़ा था कोरा में, somebody written a very popular answer and people were thrilled कि उसने 3 कंसेंट वो सर्कल्स बनाए और उनमें जो था, जो कॉमन ग्राउंड जो था जिसमें मैक्सिमम हो गया कि साइकोलॉजी टेस्ट, मतलब उसने ना कि थॉट्स, एक्शंस और वर्ड्स में जितना हार्मनी थी, एकदम सिमिलर थे, तो वो इंडिविजुअल उतना ही बढ़िया था और वो सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसा करके थॉट प्रोसेस। प्रॉब्ली दिस द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क कि अगर ये सब चीजें एक सिंक में होंगी तो इंडिविजुअल रेकमेंड हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है और ना आपको इन चीजों की चिंता करने की जरूरत है। These are the things which the assessors are going to do. They will find out. So you don't bother. And it is not that somebody whose thoughts, actions, and words are absolutely in sync will get selected. One thing is assured that this person, when he goes for the assessment, then there will be total congruence, or there is very high chance of congruence in the assessment. क्योंकि वो जैसा बोल रहा है, जैसा कह रहा है, वैसा ही कर भी रहा है। तो आई मीन साइकोलॉजी, जीटी और इंटरव्यू ऑफिसर उसको असेस एक ही करेंगे। अब ये हो सकता है कि ही इज एब्सोल्युटली रिजेक्टेबल और ही इज एब्सोल्युटली सेलेक्टेबल और इज मिडवे। ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर।
तो उससे उसके चांसेस कुछ इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, खाली उसमें जो है कॉन्ग्रुएंस आई है, दैट्स ऑल. तो एज एन इंडिविजुअल डोंट बॉदर फॉर ऑल दिस हार्मनी, यू बॉदर फॉर सेल्फ. तो डाउट थोड़े आ रहे हैं, मतलब ये चीजें क्लियर इतनी आसानी से हो नहीं पाती हैं. आप हमारी प्रैक्टिकल गाइड ले लीजिए, वो उसे पढ़कर जो है समझिए ये OLQs OLQs का डेवलपमेंट के बारे में हमने क्या समझाया है, और कैसे ये चीजें क्वालिटीज आप इम्प्रूव कर सकते हैं इन योर रियल लाइफ. तो वो आप करके चलिए, एंड देन थिंग्स विल वर्क आउट गुड फॉर यू. तो in simple words, if you are a student, be a good student. That's the one very important thing. And if you are a worker, then be a good worker. Along with that, have good general awareness and good physical fitness. Just these things should be adequate to see you through. You don't have to get involved in any jargon or this harmony. तो आपकी बात बन जानी चाहिए. अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन रहता है, क्लैरिटी की कमी है कि भाई क्या कमियां हैं, कैसे इंप्रूव किया जाए, देन द आंसर इज दैट एनरोल फॉर आवर गाइडेंस प्रोग्राम. आई विल असेस यू एंड टेल यू कि भाई क्या क्या इंप्रूव करने की है. विल गिव यू अ क्लियर कट रोड मैप, and you can start working on that roadmap, and we'll jointly keep monitoring your progress to see where mid-course corrections are required, and see that you get success. And you can listen to the interviews of so many of our successful candidates as to how they improved in so many dimensions of their personality, and they got success. Fine. So this is what I did. Thank you. Yes, sir. Sir, Ankit Yadav is asking, sir, my father has passed away due to addiction of alcohol when I was 10 years old. Can I state the same reason in my SSB fast? Because I was told in a coaching academy not to tell this reason. Okay. Please do not believe the guidance of this coaching academy. It is absolutely wrong. And you should be absolutely honest in your interview. Now, let me explain why it is important to be honest. It is a sad truth of your life that your father had this alcohol dependency, and because of that, he passed away. That's a sad thing. But it is also a thing which is a fact of your life and your upbringing. It's a truth of your upbringing. And it would have had impacts on your life. And these impacts would be visible from your various other, your thoughts, actions, and all that. By hiding this truth, you are creating complications for the interviewing officer to assess you correctly. So by telling this lie, your picture is not getting created, appropriately. तो ये आपने नहीं करना, तो ये बताना है आपने. और फिर क्या क्या हुआ, तब वो आपको बेटर समझ पाएंगे, and then he will be able to make a good decision about you. इससे देखिए मुझे एक केस ध्यान आता है. I had one student whose father was a colonel in the army, and he used to write that in PIQ form, naturally, father colonel. Whereas there was a very important fact, and that was that his mother and his father had divorced when he was about 2 years old or something like that. तो एक कर्नल के घर में रहने वाली जिंदगी उसने जी ही नहीं थी. उसकी मदर टीचर थी, उनके साथ रहा था वो. नाउ he was advised like this coaching academy जैसे एडवाइस आपको कर रहा है कि मत बताइए ये बात, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट आपके फादर का है और उससे आपका कॉनोटेशन नेगेटिव चला जाएगा, शायद आप भी एल्कोहलिक हो गए. Whereas actually I would say जिसके फादर एल्कोहल डिपेंडेंसी की वजह से जिनका who died, I would say the very rare chances that this guy would become an alcoholic. वो उसने एग्जाम्पल देखा हुआ है घर में ऐसा होता हुआ, तो ये वेरी वेरी अनलाइकली. तो मैं अब दूसरे की बात बता रहा हूँ.
तो अब जो है द कॉनोटेशन कम्स इन द इमेज कम्स इन द माइंड ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। क्या चाहिए भाई, ठीक है, गवर्नमेंट एकोमोडेशन में रह रहा होगा, सेंट्रल स्कूल या आर्मी स्कूल में पढ़ रहा होगा, दिस स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ये वो चीजें भी अवेलेबल होंगी एंड ऑल दैट। वेयर इज नथिंग ऑफ दैट इज द ट्रूथ। वो तो जिंदगी बिल्कुल अलग चल रही है उसकी। अब वो ये बात छुपा के ये बताता है कि मैं कर्नल साहब का बेटा हूं, तो क्या होगा, उसका असेसमेंट विल गो wonky because how he has developed is not in accordance with the opportunities that were as reflected on paper available to him, because reality में वो available थी नहीं उसको चीजें, opportunities असल में तो opportunities बहुत कम available थी। वो कर्नल के बेटे की जिंदगी तो उसने जी नहीं है। अब वो ये कहानी बता के चलता है क्योंकि कोचिंग वाले ने बता दिया था। अब उसकी वजह से उसका असेसमेंट गलत होगा and his chances of rejection would be very high because of this. So please don't do such things. Don't fall for these traps of these coaching academies, websites and all that, who primarily are trying to teach you to manipulate behavior. मतलब उनका एजेंडा है वो किस तरह से तुम्हें कह रहे हैं कि तुम बेवकूफ बना के रिकमेंड हो जाओ, अपने आप में कोई चेंज मत लाओ। ये अप्रोच ही गलत है। सेलेक्ट होने के लिए अगर आप में शॉर्ट कमिंग्स हैं तो आप में पर्सनालिटी चेंजेस लाने पड़ेंगे एंड दे विल स्टार्ट फ्रॉम डेली डेवलपमेंट ऑफ डेली हैबिट्स। तो जो है चेंजेस इंक्रीमेंटल मैनर में आएंगे हल्के, तब आपका जो है बात जो है आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट आएगा, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट and then your selection chances will increase. So this is the way, not this manipulation of way through SSB is not going to work. I hope my answer has clarified your, queries to you. Thank you. Sir, Aditya Jadhav is asking, good morning, sir. Sir, I barely have managed to clear the cutoff of AFCAT. Should I appear for SSB or not? नहीं, चले जाइए आप एसएसबी, आपने आफ्टर ऑल रिटन एग्जाम पास किया है और अपने इम्प्रूवमेंट पर फोकस करिए। देखिए, आज आपने एग्जाम पास किया तो आपकी एकेडमिक कॉम्पिटेंस इतनी अच्छी नहीं थी, मान लिया आपने, जस्ट अबाउट कट ऑफ क्लियरिंग वाली थी, पर अगले 2-3 महीने में उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इट कैन बी रेज्ड कंसिडरेबली। आपकी एकेडमिक एबिलिटी, जनरल नॉलेज को इम्प्रूव किया जा सकता है, फिटनेस को इम्प्रूव किया जा सकता है, इंग्लिश को इम्प्रूव किया जा सकता है। डू दैट। So if you are, let us say you got something like 160 marks in this paper, and in the next paper, next 6 months बाद जो पेपर होता है उसमें your ability to score something like 220, तो अगर वो 6 महीने बाद ये सिचुएशन होने वाली है, तो 3-4 महीने बाद जब शायद आपका एसएसबी हो, तब आपकी एबिलिटी करीब 200 के आसपास की होगी। तो then your mental caliber would be of a person who is reasonably fit for selection. तो ये चिंता क्यों करते हो, उस वजह से मत छोड़ दो। गो फॉर योर एसएसबी एंड कीप प्रिपेयरिंग टू इंप्रूव योरसेल्फ फर्दर। या तो दिस इज माय एडवाइस, छोड़ मत दो, रिटन एग्जाम वाले एंट्री को मत छोड़ दो। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एकेडमिक नॉलेज, अगर फिजिकल फिटनेस में आप 20-20 किलो ओवरवेट है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। तो दिस इज माय एडवाइस। या थैंक यू। Yes, sir. Sir, Dharmendra Sharma is asking, is it good decision to leave government job to complete graduation, because simultaneously it is not possible? What if I leave for my BSc and restart all over again? As defense exams attempts education. Means this person wants to give up a government job to prepare for SSB. That's a very poor idea. And this thought that it is not possible है कि आप सरकारी काम करते करते आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई करते, that's I don't believe all this. And if you believe this to be a truth, then you are in any case unfit for selection. आपकी कैपेबिलिटी है ही नहीं सेलेक्ट होने वाला है। तो आप सरकारी नौकरी करते रहिए, along with that prepare for the examinations, qualify them, prepare properly, and you should get selected. You don't have to give up your job at all.
तो दिस इज व्हाट इट इज। बाकी आप हमारी बुक ले लीजिए, उसमें पढ़िए, हमारे हमने सैंपल्स डाले हुए हैं, लोगों की केस स्टडीज हैं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं। Rarely anybody would have left job because I discourage anybody to leave job to prepare for SSC। का मतलब वो जिम्मेवार आदमी नहीं है और अनेबल टू मैनेज ऑर्गेनाइज लाइफ और डिसिप्लिन में कमजोरियां हैं, तो वैसे ही सेलेक्ट होने लायक नहीं है। When you are able to handle difficulties in your day-to-day life, only then you are developing the competence to get selected to become an officer। ये आप में एबिलिटी होनी चाहिए। कोई मतलब नहीं है नौकरियों को छोड़ने का, सब हो जाएगा। थैंक यू। Okay. Ritik Verma is asking, sir, can we write same sentence for two different words in VAT? Yes, you can write for five same sentence for 5 words। Yeah, next question, please। Okay. Sir, Messi is asking, sir, during my previous SSB interview, I was a fresher. I had been asked whether I prepared by self or by coaching. And when I replied by self, he says good. What does this indicate? Pujan. Okay, this question and questions of such nature keep troubling the minds of our aspirants in a very serious manner। I keep advising you people not to get bothered। वो गुड बोलता है या बैड बोलता है, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो आपका असेसमेंट वही करेगा जो आपकी जेन्युइन कैपेबिलिटी है, ठीक है ना। तो आप कोचिंग, अगर जो था कोचिंग टैबू होता ना, तो वो लिख दिया होता ना कि कोचिंग जो करके आएंगे उनका 10% कम हो जाएगा। उनको जो है हम पहले ही we'll rate them down, और या फिर उसके अगेंस्ट वो लॉ बना देते पॉलिसी। ऐसा तो कोई पॉलिसी नहीं है। फाइन, सो don't get into this। Other important thing for all of you to realize is कि असेसर क्या सोच रहा है इस चक्कर में मत पड़ो। क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असेसमेंट होगा, वो उसको काम करने दो, वो उसका काम है। इज अ प्रोफेशनल एंड ही विल डू अ गुड जॉब ऑफ इट। दैट इज व्हाई ही हैज बीन पुट इन दैट प्लेस। तुम्हारा काम है अपनी कैपेबिलिटीज को सही करना। अगर आपकी कैपेबिलिटी सही होंगी और इन ऑल राउंड मैनर, देन यू विल गेट रिकमेंडेड। अगर वो नहीं होंगी तो नहीं होगा। फाइन, so it is as simple as that। So please don't get your focus on कि असेसर ने बोला गुड बैड एंड ऑल दैट। फॉर दैट मैटर, ये गुड की अगर बात आप करते हो तो इनवेरिएबली जब जीटीओ जो है, जब कमांड टास्क के लिए बुलाते हैं आपको, और आप टास्क जो है जैसा भी था उसको कर देते हो, और जीटीओ is not interested in increasing the degree of difficulty and all that, and in a very energetic voice he says, well done commander। So in most cases it means fuck all done commander। Actually I want you to go away quickly because I don't want to waste my time on you, because I had decided already that you will never get selected because your performance in the GD's group planning exercise and PGT and HGT has been of a level that you stand no chance of getting selected। Fine। हाँ, तो वेल डन कमांडर जो है उसका मीनिंग ये हो सकता है। तो वो गुड जो इंटरव्यू ऑफिसर ने बोला, उसका इम्पैक्ट और उसका असेसमेंट से कनेक्शन निकालने की कोशिश बिल्कुल भी ना की जाए, तो आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Thank you, sir. We will meet next time. Please write to us your specific queries at nofrills@gmail.com। Okay, then thank you all of you, boys and girls। Thanks a lot, Yogita। Thank you very much।